Hi everyone, my name is Ravi Prakash, and just a minute, guys. We're starting this QA practice session here. Okay, just let me check all parameters are fine. QA practice session. Okay, just a minute, guys. I think I'm not visible on a screen, right? I should be visible now. I think all fine. Just let me check. Yes, all fine. Chalo, hello everyone now. So again, we should start. Okay. So there's little technical difficulties we need to handle sometime. Okay, chalo. So basically, we'll be doing some good QA questions here, and we'll be revising some good things actually. Okay, so some good concepts. Fine. So let me discuss few questions, guys. Okay, so let's say my first question here is, this question goes like 2750230 has here. This question goes like, this 5 times 01 has actually 16 factors. Okay, find their sum of the prime factors. Find their sum of prime factors. Okay, so let's revise some good concept of factors, guys. Okay, so look at this. So this has got 16 factors. Now we need to find the sum of prime factors here. Okay, so if you look at this question here, guys. Okay, I think this is not visible on that side, right? Okay, I'm sorry. Yes. Find a sum of prime factors. Yeah. Now, once you look at this question here, so this question basically, this says that, so this number has got 16 factors, right? So basically the problem comes, how do you factorize such questions actually? Okay, so how do you factorize such questions? Okay, so look at this question. For example, if we have this first question here as, let's say for this first one will go like this, this funda. Yes, now. So see, if you have got this 275 times 01 actually, so you can sense, right, that this number actually, it actually becomes like this, right? This number you can sense it becomes like this 27. It should be 0 6 times, right? Plus 1. I can write this. Okay. And then you can think that this is of the form what? 300 cube plus 1 cube. This is how you can think it, right? Okay. This 300 cube plus 1 cube actually. And then this 300 cube plus 1 cube, this is actually a cube plus b cube form, right? This a cube plus b cube form can be written as a plus b into a square
minus AB plus B square. That's how we write A cube plus B cube, right? So similarly, we'll write here 300 cube plus 1 cube, okay, is equal to A plus B, that is 300 plus 1 into A square minus AB, 300 square minus AB, 300 into 1, right, and then plus B square plus 1 square actually, correct. Now, if you observe it, right, then basically again after this we don't need to actually just don't try solving it blatantly, right, because again you'll be back to the same problem here. Okay, so what I want to do here, so I want to just make like 3 is 100 square minus 301 in plus 1 square. So I just trying to factorize it, right? So I can sense it. It's of the form what? It's of the form like A square minus AB plus B square. It's of the form A square minus AB plus B square. If I add AB and if I subtract AB here, that should become A minus B whole square, and then I can write plus AB actually. That's what I can write here. Okay. So what I can write here now. So in this question we can write like this: 300 plus 1. Now just add this. We have subtracted this minus 300 into 1. Okay, and we have added plus 300 into 1. Right. This actually becomes 300 plus 1. Okay, should be right here. This actually becomes 300 plus 1 into 300 square, or 300 plus 1 whole square, okay, minus 900. Okay, so basically I need to subtract this minus sign. So basically what I'll do here, guys. Okay, so in this case, how do you become minus 900? So basically I have added plus 300 and I have subtracted 300 here. Okay, so I have added plus 300 and subtracted 300, but that will actually not make in the form of what? 300 plus 1 into whole square. I want basically this form, right? Let's say for example why I've done this. Okay, let's check guys why I've done this. So let me break this a bit. So this becomes 300 square plus 1 plus 2 into 300, and this is minus 3 into 300 actually, right? So I wanted to make it in the form of plus, right? I wanted to make it in the form of plus actually, but we have minus sign here. So rather than breaking in the form of a minus b whole square, what I've done here, it's like adding 2ab. It's like adding 2ab and subtracting 2ab, right? Then it will become a minus b whole square. Then it will become a plus b whole square. This and minus 3ab. It will become minus 3ab, right? Okay. So the initial thought process goes like that I need to factorize in the form of a plus b whole square. But now what I will do, because I want in this, why I want minus sign here, because just think over it, right? If I had a plus sign instead, so after that I couldn't factorize it, right? But now since we have a minus sign here, so now I can factorize this. How I can factorize this? So I can factorize like this. Okay, I can factorize like this. This is a minus 900, guys. Okay, so I can basically factorize like this. So this 900 will be actually 30 square, and it is like a square minus b square. That's why we have done minus instead of plus. Okay, so we all of you got this, right? Okay, now if I solve it here further, so what I'm getting here is C. So I'm getting here basically this is 301 into, now this a is square minus b square, that is 300 plus 1 whole square minus 30 square, and then again I can break like a plus b into a minus b. So what is a plus b? 301 into 301 square minus 30, that becomes 271 into 331. That's it, right? And we know that what is 301? 301 is some 7 into 43. And if you check it, 271 and 331 are prime numbers. Okay, so into 271 into 331. How do you check for prime numbers? Just do the square root, and you can check for all the primes before that number, right? Okay, that basically will turn into this value. Okay, any doubt I'm getting? No, fine, yeah. Okay, so now this 271, 331 here. Okay, so now this has got 4 prime factors here. So we have got 4 prime factors here. Okay, so 4 prime factors means total we have got 16 factors, right? We need to find the sum of all the prime factors here. How many prime factors? 4. What is the sum, guys? Just add it. 7 plus 243 is 50,
plus 271 is 321 plus 331 is 652. So 652 is the answer for this question, right? So nice question. Okay, nice question. On this spot thinking required, right? Chalo. Let's go to one more question, guys. Let's move to second one now. Okay. Now second question, let's see. This question says that n square has this question is one of from recent mock. Okay, n is recent mock of Unacademy. N square has exactly 7 factors before n. Okay, and it also says that n square is exactly 7 factors before n. Okay, so how many factors? The question was sum of all the factors of n cube. Find sum of all the possible number of factors of n raised to 4. It doesn't matter, it is n4 or n3. Okay, we can improvise a bit. Correct. Now this question says that so n square is exactly 7 factors before n. So again, it will revise the concept of factors here. Okay, so it has exactly 7 factors before n. Find sum of all the possible number of factors of n4. So we know this funda, right? If you try to if you just revise this factors rule. So let's say for example, take example of n. Obviously, is greater than n and n is a natural number here, right? Okay. So now basically, if you think here that if n square has exactly 7 factors before n, find the sum of all the possible number of factors of n raised to 4. So basically, n square has got the, if you write all the roots in the ascending order, then n will be the middle value. Exactly 7 factors before n, that means exactly 7 factors after n also, right? Just you can check with an example here, guys. Take an example of, let's say for example, 36. Now n square is 36, its root is 6. You can check 1, 2, 3 and 6. Exactly 3 factors before 6. Okay, sorry, 4 also. Exactly 4 factors before 6, that is square root. And so after, if you write the factors, 9, 12, 18, 36. Exactly 4 factors after 36 also. Correct. Okay. So now, if we have got this 9, 12, 18, so once we got this number here, that means that what I can conclude from here is, so I can conclude that n square has got exactly 15 factors. Sorry, yes, 15. 7 plus n itself and plus 7. So n square has got exactly 15 factors. Okay, so if n square has got exactly 15 factors, now how do you write this n square? So if n square has got 15 factors, if I don't break 15 at all, so I can write n square in the form of what? A raised to 14. Okay, so I can write n square in the form of a raised to 14, or better I should write here p1. P1 is any prime number. Okay, so any p1 prime number of p1 raised to 14. If n square has got, if 15 I can break it in 2 parts, 3 and 5. So basically I'm trying to break it in the form of 2 prime numbers here. Okay, that is, so I'm trying to break in the form of what? 2 prime numbers here, that is 3 and 5. Okay, so basically prime factors 3 and 5. So it's p1 and p2 here. So p1 has got factor 3, so power 2. p2 has got factor 5, so power 4. Right? So now n square is p1 raised to 14. So from here I can deduce that n is equal to some p1 raised to 7. If n square is p1 raised to 14, then n equal to p1 raised to 7. And from here, if n square is p1 square into p2 raised to 4, so n will be equal to what? N will be equal to p2, yes, p2, n, yeah. So here n will be equal to what? So n will be equal to p1 into p2 square. Okay, sorry, p1 into p2 square, right? Okay, now, so how many factors n4 has got, right?
So on one hand, n4 will be equal to what? N equal to p1 n raised to 7. So n4 is equal to p1 raised to 28, and on the other hand, n is p1 p2 square. So n4 is p1 raised to 4 into p2 raised to 8. So p1 raised to 4 into p2 raised to 8, right? So now basically how many factors here? So 28 means one answer will be 29 factors. If n4 is p1 raised to 28, so 29 factors. p1 raised to 4 into p2 raised to 8 means 5 into 9, 45 factors. So n4 has got two answers here, 29 factors and 45 factors. So if we wanted the sum of all the possible values, so its sum will be 74, no? 74 would be the answer here. Okay, just let me check one live chat. Any doubt? Anyone having? No, all fine, right? Yeah. Okay. Now, let's move to the next question, guys. Yeah, no doubt. Okay, fine. So now let's move to the next question here. Okay. Now the next question says that again we have one question from mock. Actually I've kept here. Yeah, fine. This third question. Okay, now basically n is equal to something like 1 into 1 factorial plus 2 into 2 factorial plus 3 into 3 factorial, and it goes like 15 into 15 factorial. So question is n plus 2 by 16, what is the remainder? Okay, now so you should know how do we break these factorials here, right? Okay, how do we break these factorials? Should be knowing that. Okay, so if it is n is equal to 1 into anything, somebody asking doubt, no? Fine. Okay, so basically n plus 2 by 16 remainder, right? So what is n plus 2 by 16 remainder here? So basically n plus 2 by 16. So basically if I want to solve first n actually, how do you solve this n here? So n is equal to 1 into 1 factorial plus 2 into 2 factorial plus 3 into 3 factorial, and it goes like 15 into 15 factorial. So how do you break n here, guys? You break n like, now this 1 into 1 factorial, let it be 1 only, that's fine. Okay, plus 2 into 2 factorial, this 2 actually we can write as 3 minus 1. Okay, this becomes 3 minus 1 into 2 factorial, plus this 4 I can write as what? 4. This is how you solve a factorial series. Okay, so 4 minus 1 into 3. Okay, 4. So plus 4 minus 1, that is 4 minus 1 into 3 factorial. Then we'll have, and this will go on till plus 15 into 15 factorial here, right? Now what you can write here? 2 factorial into 3, that becomes 1 plus 3 factorial, minus 1 into 2 factorial is minus 2 factorial, plus 3 factorial into 4 is 4 factorial, and minus 1 into 3 factorial minus 3 factorial. Plus this will go right? The next term should be, you can sense it, right? 5 minus 1 into 4 factorial. If you write one more term for clarity, 4 factorial into 5 will be 5 factorial, and then minus 1 into 4 factorial will be 4 factorial here. And this will go till 15 into, if this is 15, you can write as what? 16 minus 1 into 15 factorial. So 15 factorial into 16, right, is actually 16, you can write here 16 factorial minus 15 factorial. 16 factorial minus 15 factorial. Now you can see that all these terms will get cancelled here, right? So all these terms will get cancelled ultimately. Minus 15 will get cancelled once you write the previous term 14 factorial into 14, that 14 has 15 minus 1 there. Okay, so now what I'm left now? So basically 1 minus 2 will be minus 1, and then I'm left with 16 factorial. 16 factorial minus 1, so my number left is what? So ultimately I'm left with 16 factorial
minus 1 divided by 16 factorial minus 1 divided by 16 remainder. Okay. Now 16 factorial by 16, what the remainder? Sorry, plus 2 also, no? This is n actually, and we wanted plus 2. So we wanted actually n plus 2 remainder, right? So we can just add plus 2 here, guys. So this becomes actually 16 factorial plus 1 by 16 remainder. So 16 factorial by 16, that remainder is 0, right? And that 1 by 16 remainder is 1. So 1 would be the answer actually. So 1 would be the answer for this question. Again, clear to all, right? Now, next we can see this. So all the questions are picked from recent mocks, guys. Okay. So one more question we can see here. 33 factorial by 37. What's the remainder? Okay. So basically we are focusing more on number system today. Okay. And then in the next class we'll be focusing more on geometry. Like that we'll do. Okay. So 33 factorial upon 37, what is the remainder here? Okay. So once you know this, right, this is an application of Wilson's remainder theorem actually, right? So what does Wilson's remainder theorem says that? So Wilson's remainder theorem, Wilson's has got 3 statements here. What's the first statement? That first statement says that 36 factorial by 37, that remainder is equal to minus 1. Okay. Or I should write in terms of P, it will be better, right? You can revise also. Okay. So this question says that write in terms of P here. Okay. So P minus 1 factorial upon P, remainder is minus 1. Correct? Then P minus 2 factorial upon P, remainder is minus 2. Then P minus 3 factorial upon P, remainder is minus 3. Sorry, minus what I am doing. I was thinking something else here. Okay. So this remainder is plus 1. Okay. So P minus 2 factorial upon P, that remainder is plus 1. Okay. And then P minus 3 factorial upon P, that remainder is actually P minus 1 upon 2. Okay. So I think this is not visible. Okay. That's what my concentration was here actually. Seeing that visible or not. Okay. This is minus 1 by 2. Okay. So P minus 3 factorial upon P is P minus 1 upon 2. Okay. So we have got these 3 theorems of Wilson's actually. Okay. Now 33 factorial, if you see, guys, so basically 33 factorial, once I see here, so 33 factorial is basically, so now I can just relate with anyone. Okay, let's pick this one. Okay, because it is 1, no, it's easy to pick, right? So had it been 37 here, sorry, had it been 35 here, so 35 factorial by 37, P to P minus 2, P is a prime number. Okay, this remainder should be 1. Correct? So 35 factorial by 37, that remainder is 1 actually. Now I want to relate this to 33 factorial here. Okay, so now what I can see here, 33 factorial into 34 into 35 by 37, that remainder is actually 1. Okay, this part remainder I want. Okay, so I don't want this part remainder, right? So 34 by 37, what is the remainder here? That remainder is minus 3 and this is actually minus 2. Okay, so once we write this, this actually becomes like this, guys. It becomes like this, 33 factorial by 37, that remainder I want, into minus 3 into minus 2 is 6, and this is equal to 1, right? Now the problem here is this 6 I cannot send this side. Okay, this 6 basically I cannot send here this side. So once I cannot send this 6 this side actually, because once I send 6 this side, the remainder will come in fraction. Okay, so 6, it will become like 1 by 6 here, and 1 by 6 can never be the remainder, because remainder can never be in the fractions actually. So when I get such kind of situation here, because when always remember, right? So whenever we have such kind of situation that remainders are coming in fraction. Okay, so in that case, what you do, you always write the general form of remainder. What you write here? You write the general form of remainder. So basically, what is the general form? So a number when divided by 37,
remainder is 1. The general form is actually 37k plus 1. And now you just check for the values of k which will cancel this 6. So at what value of k this 6 will be cancelled? So this is quite easy to calculate because we can write here 37k plus 1 by 6, you want remainder to be 0. If you want to cancel 6 with 37k plus 1, you want remainder to be 0 here. Okay, so once you want this remainder to be 0, so in that case what we will do? So let's say 37 by 6 remainder is 1. Okay, that is k plus 1 by 6 remainder is 0. That means k should be equal to what? 4, right? Okay, at k equal to 4, k should be equal to 5, right? Okay, because at k equal to 5, at k is equal to 5, 5 plus 1 is 6, 6 by 6 remainder is 0. So k should be equal to 5. So once I put k equal to 5 here, what I'll get, guys? I'll get 33 factorial by 37, its remainder is equal to, at k equal to 5, this becomes 186. And this will cancel this 6 as 31. That means 31 is the answer for this question. Okay, and it's a very good concept. How do you handle remainders in the fractions here? Okay, how do you handle remainders in the fraction? When the remainders in fraction, how do you handle that? Correct, right? Okay, now let's discuss a couple of more problems here. So basically, yeah, that's the question. Let's move to next question here. That is, let's say question number 5. Okay, now question 5 here says that if distinct, let's pick up some problem algebra also. If distinct roots of x raised to 5 minus 1 equal to 0 are 1, a square, a cube, a raised to 4, then which of the following? Then which of the following is the value of, which of the following is the value of 1 minus a into 1 minus a square? Let me write here. 1 minus a into 1 minus a square into 1 minus a cube into 1 minus a raised to 4. That's the question here. Okay, now let's solve it. So again, to revise this concept of basically algebra, this called distinct root and all. Okay, which is a bit of binomial theorem also. So once we, what is this actually? So once we write this x 5, if distinct roots of x minus 5, x raised to 5 minus 1 are this one actually. Okay, then x raised to 5 minus 1 can be written as x minus 1 into x4 plus x cube plus x square plus x okay plus 1. Why? Because if you remember the expansion here, a raised to n minus 1, that is actually a minus 1 into a raised to n minus 1 plus a raised to n minus 2 plus a raised to n minus 3, and it goes on till n. Okay, that's the expansion actually. Fine. So once we write this value, so we can write this value as x raised to 5 minus 1 is equal to x minus 1 into x4 plus x cube plus x square plus 1. Okay. Now, hi Sushant. So now if we have this x4, x cube, x square and x plus 1 here, so how we can actually break these values, right? So you should understand that basically now we can think here that the distinct roots were 1, a square, a cube and a raised to 4. Okay. So basically what I can see now, that x is equal to 1 is a root here. Okay. So I can see here that x is equal to 1 is the root of this equation. So once x is equal to 1 is the root of this equation, that means a square, a cube, a4 and a raised to 5 all will be distinct values. Okay, all will be distinct values actually, right? So what I can write here is, that means if x equal to 1 is used, if x equal to 1 is the root of the equation, that means what I can write here is, I can write that a4, right? A4, yes. So a is square,
a cube, a4, and these are the roots of x4 plus x cube plus x square plus x plus 1. Okay, so basically if a is the root here, so these are the roots. Okay, these are the roots of the equation here. So what I can write here is, basically I wanted the value of 1 minus a square. Basically what I can write here, if a is the root of this equation, that means x equal to a will satisfy this. That means x minus a is a factor. If a square is the root of this equation, that means x is equal to a square will satisfy this. That means x minus a square is a factor. Okay. If x equal to a cube, similarly x minus a cube into x minus a raised to 4 is a factor of this equation. Okay. So all these are factors of this equation. So what I wanted, guys. So I wanted the value of this actually. So this how we'll get? I'll get these values by putting x is equal to 1. So in this equation, I'll put x is equal to 1. So once I put x is equal to 1, I'll get 1 minus a into 1 minus a square into 1 minus a cube into 1 minus a raised to 4 is equal to, now after putting x equal to 1 here, you'll get 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, 5. So 5 would be the answer here, right? It's a very nice question. It's a beautiful question. Okay. Hi Dusha. Okay. चलो, तो ये हमारा एक क्वेश्चन था. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी. So good question here. Fine. Now we can see one question on basically one more mock question was there. I found it a very good question actually. Yeah, this is a question. Okay, fine. Next question, guys. Question 6. Now, question is AB plus CB is equal to 37 and AC plus CB is 72. Find the number of ordered triplets. Okay. Triplets, find number of ordered triplets ABC, okay, such that ABC are positive integers, such that ABC are positive integers. We'll talk Tushar. ठीक है, ये जरा क्वेश्चन कर लेते हैं. ओके, सो लेट अस फिनिश इट. साथ कुछ बात करेंगे, कुछ बात होगा तो. ओके. So AB plus CB is 37, AC plus CB is 72. Find the number of ordered triplets ABC such that ABC are basically positive integers here. Okay. Now again we want to solve this question, right? Okay. Now here see, actually in this question I should actually start off with, basically it would be a bit lengthier. It may be a bit lengthier if we start with 72. So I should rather start this question with 37 because it doesn't have any factor here. Okay. So now if I see here AB plus CB is equal to 37, if you take B common here, that means A plus C is 37. So B into A plus C is 37 here. So I'll form two cases here, right? That is B is equal to 1 and A plus C 37, and then A plus C is equal to 1 and B equal to 37. Since A, B, C are positive integers, so A plus C cannot be equal to 1, right? This case is discarded. That means B is equal to 1 and A plus C is equal to what? This is equal to 37 here. Okay. So once we get this value here, so A plus C is equal to 1 and B is equal to 37. Okay. Now I want to parallelly check these values here also. So AC plus CB is 72. Okay. So if AC plus CB is 72 here, so I know that now B is equal to 1. So what I'll do now? So I'll put the values like, if I put the value B equal to 1 here, so AC plus CB was 72. Now B is equal to 1. That becomes AC plus C
is 72. Now C I can take common here. C into A plus 1 is 72. Okay. Now I need to check for those values actually such that A plus C is 37. So when A plus C is 37, so obviously if you break these factors actually, right, this you want this 37 years. It's common sense, right? You want this 37 year. Okay, it is 72 year. So try to break at what? 2 into 36 or 36 into 2. Oh, okay, so near about 36 we should check the values, है ना? So once you check the value here, 2 into 36 and 36 into 2, so you can quite easily, you can see here that the value satisfying here will be A is equal to 30, A is equal to 35, sorry, in first case, A is 35, C is 2, and then we got B as 37. So one triplet I got here, sorry, B as 1, I'm sorry, B as 1. So one triplet I got here. Okay, and then 36 into 2 is 72 here. So in that case, A plus 1 equal to 2. That means A is equal to 1, C is equal to 36, and also B is equal to 1. Okay, so we have got two triplets here. One is this ABC, this is ABC. Okay, so 2 is the answer for this question. Okay, right? So I hope all of you got this. Any doubt, tell me. Okay, fine. Sure. Okay, then we can discuss one more question here. Okay. The seventh question is, this question basically says that one question I picked from the recent mock only. Okay. Good question from mock. Yeah, okay. This question we can discuss here, right? Again, it's a good question. Discuss it. Let's discuss it. Y is a real number. Okay. So y cube plus 4y minus 8 is equal to 0. I need the value of y7 plus 64y square. Okay. What is the value? This question I need. Okay. Now, once you look at this question, guys, so this question actually says that y is a real number. Y cube plus 4y minus 8 equal to 0. What is the value of y7 plus 64y square? This is how you reduce the higher powers actually. So actually, if you observe in this kind of question how to attack such questions actually, right? So you will see here that this is some y cube here. Okay, so y cube is equal to some 8 minus 4y, and in the value which you want, you can just try to relate this with y cube actually. So if you try to relate this with y cube, you can write this value as actually y cube whole square, that is y6 into y plus 64y square. Okay, now here y cube is y cube here, so y cube 8 minus 4y, so 8 minus 4y whole square into y plus 64y square I can write. Similarly, 64 plus 16y square minus 64y, so 64 plus 16y square minus 64y into y, okay, plus 64y square. So I can see that now 64y square and 64y square will get cancelled now. Okay, so I'm left with 64y plus 16y cube. Okay, so once I'm left with 64y plus 16y cube, so now what I've got here? So now I can just replace here, right? So what I've got here now? Y cube is equal to 8 cube minus 4y, or I can say if I take here 16 common, I'll get y cube plus 4y. Okay, and y cube plus 4y, if you see here, so y cube plus 4y is equal to 8. Okay, so I can put the value as 8 here. That becomes 16 into 8. What is the answer? Answer is 128. That's the answer of this question here. Okay. So I hope all of you got this right. So we discussed some 7 good questions, good concepts on numbers and algebra here. Okay. So if any of you have doubt, you can ask me.
Okay, fine. So no doubt. Okay, so guys, so almost right. The cat is very near now. Okay, so cat 20 is very near now. Okay, and okay, Tushar has some doubt. Let's see what Tushar is asking. SBI PO का एग्जाम भी देने में कैसे मैनेज करूँ, टाइम मैनेजमेंट, कुछ एडवाइस? तो करना क्या है बेसिकली, SBI PO का एग्जाम है तो देखो SBI PO में आता क्या, राइट? सो भी अब कैट का इफ यू प्रिपेयर द कैट वेल तो बेसिकली क्वांट और LID कुछ बचेगा नहीं ज़्यादा SBI PO में, है ना? नहीं वर्क करेगा सुब्रमण्यन in this question. It won't work, right? I don't think trial method will work because it's a good concept, Subramanian, how to reduce the higher power. Okay, just learn it, right? So basically in the question is some kind of link given. So basically once you see this question, it may not click, but that's how you need to establish that link actually, that y cube and y7 में कुछ link था, ठीक है? That link we have to extract. ये स्पीड मॉक दो यार, और क्या SBI PO में देना है स्पीड की, मॉक तो बैठ गया, और क्या? बैंक PO एग्जाम्स मॉक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है? एनी बैंक PO एग्जाम मतलब इफ यू कैन गिव पर डे 1 मॉक और ऑल्टरनेट डे तो देना ही चाहिए मॉक्स, ओके? बिकॉज वहीं से स्पीड आता है, यू गिव डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉक, 40 मॉक, 50 मॉक, ठीक है? सो इन एनी स्पीड बेस्ड एग्जाम, राइट? लाइक कैट क्या है ना, कैट इज मोर ऑफ अ कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्जाम, ठीक है? बैंक PO क्या है, मोर ऑफ अ स्पीड बेस्ड एग्जाम, राइट? तो बेसिकली आप सोचो कि what is your peer group right now doing actually, ठीक है? तो what is your peer group doing right now? तो आपके जितने भी लोग PO क्लियर किए हैं या जो लोग PO क्लियर कर चुके हैं, ठीक है, तो वो सारे लोग बैठ के बस मॉक दे रहे होंगे बैठ के, ठीक है? और किसी ने 100 मॉक दिया होगा, somebody would have given 150 मॉक्स in last 2 months 3 months, right? बस मॉक देते हैं बैठ के. So once the concept finish syllabus finished, ठीक है, फिर मॉक्स दो. In all different kind of mock, how do you create that different क्या बोलते हैं उसको, बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ LR सेट्स, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ पजल्स, हाउ टू कंट्रोल दैट पजल्स, राइट? तो देखो ना, मतलब अनअकैडमी में बैंक PO के एक से एक फैकल्टी है यार, नेशनल फेम फैकल्टीज है हमारे बैंक पे, अनअकैडमी में बैंक PO के साथ देखो उनका बैंक PO पे उनका काफ़ी क्लासेस वेरी वेरी हेल्पफुल, ठीक है? सो बेसिकली बैंक PO यही है, बैंक PO इज मोर ऑफ ए स्पीड गेम, राइट? तो एनी बैंक PO एग्जाम तो बस बी फास्ट एट कैलकुलेशंस, ठीक है? हाँ, इट्स ऑल अबाउट मॉक, यस, एंड बी फास्ट एट कैलकुलेशन. तो जब मॉक में मार्क्स कम आ रहे तो ये नहीं कि फिर सोचा कि कम क्यों आ रहा है, इसलिए कम आ रहा है कि कैलकुलेशन थोड़ा वीक है, राइट? वर्क ऑन कैलकुलेशंस, तो मेंटल कैलकुलेशन, वो नहीं रटने में कैलकुलेशंस नहीं, वर्क ऑन दोज मेंटल कैलकुलेशंस, अप्रॉक्सीमेशंस, ठीक है? ये सब क्योंकि वहाँ पे ऑप्शंस आता है, राइट? ओके, सो वंस यू गॉट दिस काइंड ऑफ नंबर्स एक्चुअली, मान लो ऐसा मुझे मिल गया 346/1298. अब इसको ना आपको मार्क करना है आंसर, राइट? ये मान लो DI का क्वेश्चन DI का है, इसको मार्क करना है. सो आफ्टर आपने एक DI का बार चार्ट सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद आपको ये मिला, ठीक है? तो बार चार्ट सॉल्व करने के ये सॉल्व करने से मिला के टाइम शुड बी अराउंड 50 सेकेंड्स, राइट? तो इसलिए ये सब चीज़ पे वर्क करना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है? बहुत ही सही है कि आपको ये सब चीज़ें फाइंड करनी पड़ेंगी. हाँ वही है, 25% ले लिया, थोड़ा देख लिया, इसका हाफ 649, इसका हाफ 324.5, ये 25% हो गया. देन यूर लेफ्ट विथ 21.5 ईयर. सो 21.5 बेसिकली इसका 1% इज 12.98, ठीक है? तो बेसिकली 1% इज रफली 13, 21.5 विथ लेस देन 2%, अराउंड 26.6 के आसपास, हाँ टोटल हो जाएगा वैल्यू. इट इज 1.6, सो टोटल विथ 26.6%. This kind of approximation you need to do actually, yeah. साइक्लिसिटी फाइंड करने का वीडियो रोधा पे है क्या? रोधा पे नहीं है साइक्लिसिटी का. साइक्लिसिटी नहीं होगा फिर, मुझे लगता है प्लस में पढ़ा है नंबर्स में मैंने, ठीक है? फिर अनअकैडमी प्लस पर नंबर से पढ़ा है, साइक्लिसिटी के क्वेश्चंस कराएं, इसमें नहीं होगा, ठीक है? टेलीग्राम पर जो कोई डाउट पूछना ना, कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन ऊपर पूछना टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है? 5-6 क्वेश्चन मैंने कराए थे, वो साइक्लिसिटी के अच्छे वाले क्वेश्चन, लास्ट टू डिजिट, ठीक है? पूछ लेना. स्पेशल में है, याद नहीं है मुझे यार, वो चेक कर लें स्पेशल क्लासेस.
ठीक है राइट। चलो तो गाइस पढ़ो अच्छे से, ठीक है, स्टडी वेल। लास्ट 10 डेज है, मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाए हैं लास्ट 10 डे में कैसे करना है, ठीक है। सो बी वेरी पॉजिटिव, बी डू मोर ऑफ अ मेंटल प्रिपेयर्डनेस। हाँ, थोड़े हर 2-3 दिन पे एक मॉक दो। मॉक को कुछ करना नहीं है, मॉक में ऐसे ही बैठे रहो, थिंक ओवर डिफरेंट सिचुएशंस कि कैट में कैसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे टैकल करेंगे, ठीक है। उसको मैंने पैसिव मॉक बोला था, ठीक है। तो ये सब चीज़ दो, करो इन चीज़ों को, राइट। सो इट्स मोर अबाउट नाउ मेंटल प्रिपेयर्डनेस एंड रिवाइज अलॉट। पुरानी चीज़ों को मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, क्योंकि जब भी सिमिलर कॉन्सेप्ट मिलेंगे, ठीक है, वो बहुत फास्ट क्लिक करना चाहिए, राइट। इसलिए रिवाइज अलॉट, गिव नॉट लास्ट 10 days, not don't give more than 3-4 mocks. 3 to 4 is the maximum number of mocks right now, ठीक है। So just revise a lot, give 3-4 mocks and give 2-3 mocks in which you don't do anything like passive mocks, right। बस बैठे हुए हैं और क्वेश्चन देख के मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं कि अगर कैट में ऐसा आएगा तो कैसे टैकल करना है, ठीक है। अगर ये LRD सेट कैट में आ गया, नो पेन इन हैंड, राइट, तो अटेम्प्ट करूँ कि नहीं करूँ, स्किप करूँ, क्या करूँ, ठीक है। तो जस्ट बी मेंटली प्रिपेयर्ड ना, ओके। सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड, राइट, बिफोर कैट। हाँ 3-4 मॉक दे सकते हैं आराम से, 2-3-4 पैसे मॉक बिल्कुल देने चाहिए लास्ट 10 days में। सर आई एम स्कोरिंग बिलो 40 इन मॉक्स, शुड आई गिव कैट और नॉट? नहीं दो ना यार, ऐसा कुछ नहीं होता है, बस छोड़ना नहीं गौरव, ठीक है। जस्ट दो कैट दो, ठीक है। इट्स नॉट राइट, क्या होता है ना कैट में समटाइम मॉक, क्योंकि मॉक्स आर वेरी, समटाइम मॉक्स कैन बी वेरी इरेलीवेंट एक्चुअली, एज इन लास्ट 3-4 मॉक्स आई हैव सीन, राइट। तो मे बी अगर रेलिवेंट क्वेश्चंस आए और 30% थोड़ा पेपर इजी होगा, मॉक का 20-30% अबव कैट लेवल, थोड़ा पेपर इजी होगा, थोड़ा आप अच्छा कर रहे हो तो कैन ईजिली जंप अबव 95 इन कैट। अबव 95 जंप किया तो 1-2 क्वेश्चन से 98-99 पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो यू नेवर नो, राइट, जस्ट कीप ट्राइंग, डोंट गिव अप, ठीक है। एंड जितना कैट के लिए प्रिपेयर करोगे दैट विल बी वेरी गुड फॉर नॉन कैट एग्जाम्स ऑल्सो, है ना। मतलब कैट के लिए बहुत प्रिपेयर किया QA, उतना अच्छा नहीं हुआ, बट QA काफ़ी अच्छा हो गया तो स्नैप पे वर्क करेगा। स्नैप है, IFT है, NMAT है, ZAT है, बेसिकली 5 गुड एग्जाम्स, राइट। 5 में कोई भी तो एक क्लियर करना है टॉप 30 कॉलेज के लिए, योर ड्रीम कॉलेज, SIBM पुणे, SMHRD, नरसिम्हा मंजी मुंबई, IIFT दिल्ली, IFT कोलकाता, उसके बाद एक्सेलराइट बैंगलोर, सॉरी एक्सेलराइट जमशेदपुर, ठीक है। तो ये जितने भी कॉलेजेस हैं, राइट, सो ऑल विल बी ऑल आर अंडर योर बेल्ट, राइट। तो कैट इज एन एग्जाम, ट्रीट लाइक एग्जाम एक्चुअली। हाँ प्रिया, तो तुमने अपना नाम कॉफ़ी क्यों रखा है, ठीक है। मतलब जिस कॉफ़ी पसंद है नाम कॉफ़ी रख लोगे, मुझे चिकन पसंद है मैं अपना नाम चिकन रख लूँ, ये कौन सा बात हुआ। इज एनी पॉसिबिलिटी दैट 100 क्वेश्चंस विल कम? ना, लीस्ट तुषार, देखो दुनिया कुछ भी हो सकता है, ठीक है, दुनिया में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट लेस देन 1% प्रोबेबिलिटी है कि 100 क्वेश्चंस विल कम, बिकॉज देन द पेपर लेवल विल गो वेरी इजी and CAT will not test that easy. CAT is not SSC CGL, right? ठीक है, इसलिए डोंट वरी, 100 नहीं आना चाहिए। द क्वेश्चन शुड बी अराउंड, ये तो जितने भी क्वेश्चन है, राइट, अपने आप को परसेंटेज से प्रिपेयर्ड रखना, ठीक है, कि लेट्स से 50% to 60% अगर हम मार्क्स स्कोर कर लें, हाँ, तो जो बेसिकली मिलता है ना कैट के, जो आपको स्टार्टिंग के पहले 15 मिनट्स मिलते हैं, राइट, those 15 minutes is only for reading questions, reading ये instructions। उसमें अपने माइंड को प्रिपेयर करना है कि कितने क्वेश्चंस हैं, कितना मार्क्स है, क्या नेगेटिव है, राइट। 50 to 60% मार्क्स अगर आपको लाने हैं एंड विल बी वन ऑफ द टॉपर्स एक्चुअली, ठीक है। तो ऑलवेज स्टार्ट, जैसे मान लो सपोज क्यू में 25 क्वेश्चंस है, स्टार्ट वेरी अग्रेसिवली कि मुझे 20+ करना है, बट एट द बैक ऑफ द माइंड मुझे ये भी ध्यान रखना कि भाई अगर 12-13 भी कर लिया तो आई बी इन 97-98 रेंज, ये में उससे ज़्यादा ही, ठीक है। तो इसलिए दैट क्वेश्चन यू हैव एट योर बैक, बट स्टार्ट एग्रेसिवली, तभी ना कोई फुल टॉस मिस नहीं करेंगे, ठीक है। अगर स्टार्ट करेंगे डिफेंसिवली तो कोई फुल टॉस ही मिस कर जाएंगे मैच में, यहाँ भी वही है। सो इट्स लाइक स्टार्ट वेरी एग्रेसिवली, ओके। नहीं पूरा सेक्शन तो स्किप नहीं कर पाओगे ना प्रिया, ऑब्वियसली, राइट, यू कांट स्किप सेक्शन ना मॉक्स में, तो पूरा ही दोगे ना मॉक बेसिकली, ठीक है। तो अभिषेक पांडे पैसिव मॉक्स दीजिए ना, बोला था मैंने, पैसिव मॉक्स दीजिए, उससे मेंटल प्रिपेयर्डनेस भी आता है, और एक मेंटल क्या होगा ना कि जब जैसे सब देख लिया क्वेश्चन,
पर ठीक है हाथ में पेन है ही नहीं, तो कुछ क्वेश्चन मेंटली भी करने का ट्राई करोगे कि चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है, टाइम तो भी बचा हुआ है 15 मिनट, पास पैसे में उसका भी फायदा होता है कि मान लो 40 मिनट का क्यूए है, आप सेक्शन स्किप नहीं कर सकते, मान लो 20 मिनट में सब देख लिया सारा क्वेश्चन, ठीक है, अब 20 मिनट क्या करें, तो कुछ क्वेश्चन को मेंटली सॉल्व करने का ट्राई करोगे, ठीक है। तो ऑल पैसिव मॉक्स सारा क्या है ना, मेंटल पावर प्रिपेयर्डनेस और पावर बढ़ता है, ठीक है। तो 3-4 मॉक देने चाहिए, डोंट वरी। Kunal, just see, I don't know, just check that, right? I told you ना, in any good national level exam जहाँ पे एक अच्छा डिफिकल्टी लेवल है, like don't take बैंक पी एंड ऑल, ठीक है, SSC एंड ऑल, बट एग्जाम लाइक कैट, एग्जाम लाइक जे, ये सब एग्जाम में ना, इफ यू सी 50 to 61 मार्क्स, ठीक है, in any exam with decent difficulty level, right, you should be at a very good position, ठीक है। तो पहले ही जब आप वो जो फर्स्ट 50 मिनट्स जब इंस्ट्रक्शंस पढ़ोगे तो तभी ये चीज चेक कर लेना, ठीक है, कि इतना कर पा रहा हूं ना, फाइन। रूपा जो रिवाइज कर, रूपा जो भी पढ़ा रिवाइज करो, ठीक है। रूपा अरिथमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री, 3 चीजों को अच्छे से कर लो, दैट शुड बी वेरी गुड। अमृत वो लोग निकालेंगे हमेशा, हमेशा ना कैट के बाद हमेशा सस्पेंस रहता है, तो बस अपना अच्छा परफॉर्म करो, एक बार 98 प्लस 98 99 प्लस लाओगे, टॉप 30 टॉप 40 कॉलेज मिल ही जाएगा, ठीक है, कितना भी खराब प्रोफाइल हो आपका, डोंट वरी। सर सुना है कि IIM रोहतक ओवरऑल परसेंटाइल देखता है, नॉट सेक्शनल। IIM रोहतक ओवरऑल परसेंटाइल देखता है, नॉट सेक्शनल, ठीक है। तो मिल गया आंसर। LRD में अगर सॉल्व करते देखेंगे, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि हम अटेम्प्ट कर सकते हैं कि नहीं, कि लाइक 5 मिनट्स में। तो राधिका मैंने कब कहा मॉक मत दो, मैंने कहा कि लास्ट 10 डेज में 2 या 3 या 4 पैसिव मॉक देने चाहिए, बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है, और ये अभी का नहीं है, ये बहुत ज़माने से चला आ रहा है, ठीक है। इवन जब IIT की तैयारी वगैरह करते थे ना, तो फिट में भी बोलते थे सब करने के लिए, कोटा वगैरह में भी, ठीक है, अच्छे क्लासेस में, कि पैसिव मॉक दो। क्या होता है ना, एक ना इंसान का मेंटल प्रिपेयर्डनेस होता है, ठीक है। जब आप क्वेश्चन देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार ये जो क्वेश्चन है, किसको एग्जाम में अटेम्प्ट करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, कि छोड़ देना चाहिए था, ठीक है। तो वो जब तक हाथ में, क्योंकि अगर हाथ में पेन रहेगा ना, तो इंसान चला ही लगेगा। मान ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, आपने ज्योमेट्री पढ़ा है तो चला ही लग जाओगे, लिस्ट्री होना है कि नहीं होना, वो पर्पस थी, वो तो पर्पस हो गया जो होना था, ठीक है। और ये पैसिव मॉक हम लोग बहुत देते भी नहीं पहले से, जस्ट लास्ट 10 डेज का एक मेंटल प्रिपेयर्डनेस होता है, कि जस्ट ट्राई टू बिल्ड योर सेल्फ अप मेंटली फॉर दैट एग्जाम, कि एग्जाम में क्वेश्चन राउंड 1 से राउंड 2 में छोड़ने का हैबिट होना चाहिए, और 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ने भी है, राइट। आई टोल्ड यू ना, एक आर्ट ऑफ लिविंग होता है, नॉट आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग, राइट। द फास्टर यू लीव एनी क्वेश्चन, तो वो भी एक कॉम्पिटिशन है, बहुत बड़ा बात है। कोई बंदा जो है ना, कोई फर्स्ट के क्वेश्चन छोड़ेगा 2 मिनट में, ठीक है, और कोई देख के कुछ छोड़ देगा, तो आप विनर हो, राइट, जिसे देख कर छोड़ दिया, तो वही बहुत पॉइंट जो होता है, ठीक है। थैंक यू प्रिया फॉर अटेंडिंग क्लासेस ऑलवेज, ठीक है। पैसिव मॉक में जस्ट मॉक देखो, डोंट यूज पेन, जस्ट बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो स्किप करेंगे कि अटेम्प्ट करेंगे, राउंड 1 का क्वेश्चन है कि राउंड 2 का क्वेश्चन है, करना है कि छोड़ना है, ठीक है, ये सब चीजें जस्ट करने के। हाँ यस कुणाल, यस दैट विल बी मोर देन इनफ, ठीक है, दैट शुड बी मोर देन इनफ। ओके चलो यार, उससे ओवरलैप हो जाएगा ना, 8 o'clock क्रॉस हो गया, तो अगले वीडियो सेशन से ओवरलैप हो जाएगा, अनअकैडमी से मैसेज आने लगेगा, ठीक है। फिर हम मिलेंगे, ठीक है, विल मीट अगेन, ओके। सो टेलीग्राम पर बातचीत होती रहेगी, ठीक है, हम फिर अगले वीडियो सेशन मिलते हैं, मे बी ऑन सैटरडे और संडे, फाइन। सिमिलरली राउंड 1 राउंड 2, ओके, राउंड 1 में ऑल दी 1 लाइनर 2 लाइनर क्वेश्चन, और राउंड 1 शुड बी ऑफ मैक्सिमम 30% ऑफ योर टोटल टाइम, ठीक है, एंड राउंड 2 में ऑल द बिग क्वेश्चंस, ओके। और अपने कंफर्ट पे क्वेश्चन सेलेक्ट करो कि किससे टॉपिक फेमस आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। राउंड 1 में सारे इजी क्वेश्चन, सारे 1 लाइनर 2 लाइनर क्वेश्चन जो इजी वाले हैं उनको कर लो राउंड 1 में। बिल्कुल आओ तो सर, एनी टाइम वेलकम, ठीक है,
आओ बिरयानी बिरयानी खाएंगे लोग बैंगलोर में। यस पीयूष यस, ठीक है ओके। अरे देखो आ गया मैसेज, बोला ना मैसेज आ जाएगा जैसे ही क्लास ओवरऑल होगा। क्लास ओवरलैप होगा। क्या हो गया सर, आई एम नॉट ऑन प्लस, फ्रॉम वेयर शुड आई रिवाइज LRDI? LRDI कहाँ रिवाइज करो, देखो जाओ ना मेरे स्पेशल क्लासेस में जाओ, देखते नहीं हो यार, जाओ मेरे प्रोफाइल में अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस है, उसमें करीब करीब 90 LRDI सेट्स है, 90 LRDI सेट्स, हाई क्वालिटी सेट्स, एब्सोल्युटली फ्री। प्लस मैंने 400 कराए हैं, ठीक है, बट मैंने 90 सेट्स वहाँ कराए हैं, 89 या 90 सेट्स, उनको तो करो पहले, तब फिर आगे सोचना ना, आगे उनके आगे के लिए। ठीक है राइट, चलें, चलो गाइस बाय बाय, मिलते रहना, बात करते रहना, ठीक है, बात करेंगे कल, फिर सेशन है एक शाम में, तो कल एक फिर से 7 PM सेशन है QA स्ट्रैटेजी का, ठीक है, अनअकैडमी फ्री वाली क्लास में, तो जस्ट वहाँ पे देखते रहना, मुझे मेरे प्रोफाइल में विजिबल है, उसमें एनरोल भी कर लेना, ठीक है। सो अटेंड ऑल द फ्री क्लासेस जितने ले रहा हूँ ऑनलाइन से, ठीक है। हाँ यस इट्स गुड भरत, इट्स वेरी गुड। 80-90 अच्छा स्कोर है भरत, 80-90 इज अ गुड स्कोर, 80-90, ठीक है, क्योंकि कैट में ऐसे ही अगर 210 का मॉक्स है, तो अगर 90 स्कोर कर रहे हो, जस्ट बी इन हाई प्रैक्टिस, जैसे ही मॉक से कैट 30% ईजी होगा, तो अगर 90 में 30% बढ़ा दोगे तो बन जाता है अराउंड 120 हो जाएगा। अराउंड 120 मीन्स यूर कैट में आपका मोर देन 51 मार्क्स है, यू बी इन दैट 97, 98, 99 रेंज, ठीक है, सो यू डूइंग गुड। हाँ तो रिवाइज करो पुष्कर, नहीं मॉक दो, कुछ कुछ नए क्वेश्चंस मिलने चाहिए, जो ब्रेन है ना, हमेशा ब्रेन को चैलेंज करो, तो गिव ऑलवेज फ्यू मॉक्स हियर, ओके, ऑलवेज गिव फ्यू मॉक्स, तो ब्रेन को कुछ नया सप्लाई मिलना चाहिए, रिवाइज तो करो ही करो, बट डू ऐड फ्यू गुड क्वेश्चंस ऑलवेज, ठीक है। चलो गाइस ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर द नया कैट को, ठीक है, 10 डेज पढ़ो, 10 डेज सोचो कि हमें करना है प्रिपरेशन ऑफ विनिंग, ठीक है, रात में जगो, दिन में जगो, कम सो, कम खाओ, बी हेल्दी, पढ़ो ज़्यादा, ठीक है, जीत की तैयारी करनी है ना, आता है ना बॉर्नविटा का ऐड, जीत की तैयारी, जीत की तैयारी करनी है, ठीक है। अभी से चलेगा फाइट 2 महीने तक, एक 10 डेज नहीं, कैट तो है ही, कैट के बाद जैट, स्नैप, IFT, NMAT, 5 एग्जाम देने हैं, तो तैयारी चलेगी टिल 24 जनवरी, 2 months फ्रॉम नाउ विल प्रिपेयर फॉर विनिंग, जीत की तैयारी, ठीक है, चलो सी यू, बाय बाय।